Hello everyone, welcome to today's class. So the today's topic of discussion is human heart. So what is the structure of human heart? Before getting into the topic, we will study about how we can categorize the circulatory system. There is intracellular circulation and extracellular circulation. Intracellular means the circulation occurs between the cell. So from the common sense we can say that the intracellular circulation occurs in case of unicellular protozoans. They have only one cell, that is why the circulation is occurring in between only that cell. So here is saying that the circulation takes place through streaming movement of what? Cytoplasm, termed as cyclosis. If we will talk about a single organism or single celled or unicellular organism, the cytoplasm will move like this, and this streaming movement is known as cyclosis. And in which organism this intracellular circulation is taking place? It is amoeba, euglena and paramecium. And the opposite, if we will talk about the extracellular circulation, it occurs outside the cell, and it is happening in case of multicellular cells, that is the vertebrates and invertebrates, those who are multicellular. And again we can divide the circulatory system into two categories, that is open circulatory system and closed circulatory system. Open circulatory system is the primitive one where there is no blood vessels to conduct the blood. So the blood flows through the cavities of the body, that is why it is called as open circulatory system. And if we will talk about the closed circulatory system, it is the advanced one found in case of vertebrates and some invertebrates also like earthworm. And this system has blood vessels. That is why the blood is conducting through the blood vessels throughout the body. So if we will talk about the human heart, it is a central pumping organ. I will describe this pumping organ mechanism in later classes. So it is a central pumping organ which pumps oxygenated blood mixing with oxygen to different parts through the circulatory system. And human heart is situated in thoracic cavity. Where is your thoracic cavity lying? In your chest, right? So human heart is situated in thoracic cavity, and this location is properly said as mediastinum, the area between two lungs. And if we will talk about the size of the heart, it is same as one's clenched fist. हाथ मुट्ठी कर जो साइज पाइबो सेटा होचे तम हार्ट रो साइज. एंड जदि हम ता वेट कथा कहबा, मेल रे ह्यूमन मेल हार्ट रो वेट होचे 300 ग्राम्स और फीमेल हार्ट रो वेट होचे 250 ग्राम्स. So see, this is the location, mediastinum, present between two lungs, and here is the thoracic cavity, the chest region where the lungs are lying. It is a 3D structure of a heart, very beautiful, right? So the heart is mesodermal in origin. What is mesoderm? Mesoderm is a germ layer. We know humans are triploblastic organisms. Why? Because they have three germ layers, that is ectoderm, the outer one, mesoderm, the inner one, and endoderm, the inner layer. So the heart is originated from the mesoderm lining, and it is four chambered. There is two atria or auricles and two ventricles. The two atria are the upper chambers and smaller ones as compared to the ventricles. So the ventricles are larger ones and the lower chambers. And these atria and ventricles are separated by a groove called as coronary sulcus or atrioventricular groove. Remember these terminologies, they are very important. So if we will go through the structure, first we will study about how the heart looks externally. What is the structure? So the heart is protected by pericardium. It has three layers: epicardium, the epicardium, myocardium and endocardium. See here. Okay. So see, this structure is zoomed out here. So we have three different layers. This is the pericardium, and this whole pinkish red one is myocardium, and this last one is endocardium. Okay. So the pericardium is again divided into fibrous pericardium, this greyish portion, then the serous pericardium, this slightly pinkish one, and this purple one is epicardium. Okay. So the fibrous pericardium, serous pericardium and epicardium layer combiningly forming this pericardium layer,
and there is a fluid present in between the serous pericardium and sorry, there is a cavity present in between this serous pericardium layer and epicardium layer. This is the cavity here, and this cavity is not empty, it is filled with a fluid known as pericardial fluid. So this pericardial fluid is filled in between this pericardial cavity, and what is its function? It keeps the heart moist, it prevents friction, and due to this fluid the heart is moving very cleanly or very frictionlessly, and it acts as a shock absorber, and it protects from injury also. So the outer one is pericardium, and the middle layer is myocardium. It is the thickest layer made up of cardiac muscles. It is the thickest layer made up of cardiac muscles, and then the endocardium layer, the innermost layer is the endocardium. So see, this is how the heart looks internally. We have 4 chamber, right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle, 4 chambers, and what? Aorta and pulmonary artery and pulmonary veins, and then superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus. Okay. So if we will talk about the atria, atria means we are saying about the 2 atriums. So the 2 atria are present having thin walls, they have thin walls, thin muscular walls, and they are the receiving chambers, they only receives the blood. यही सब कथा गुड़ाक क्लीयर हम जो आम तार मेकानिजम पढ़ा कि ब्लड कौटू कौटी की फ्लो होचे से टर्म गुड़ाक पूरा क्लीयर हो कहीं आम ताको रिसीविंग चैम्बर बोली कहचे तो एट्रिया को आम रिसीविंग चैम्बर बोली कहले आउ कौन कहूचे आम ना राइट एट्रियमटा स्लाइटली लार्जर दैन द लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियमटा स्लाइटली लार्जर आउ से दीटा जाक एट्रिया केमिति सेपरेट होती ना बाय इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम ऑरिकल्स भितर जो सेप्टम अच्छे ताको हमें कहबा इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम एट्रिया को हमें ऑरिकल्स भी कहू तो 2 एट्रियाज आर सेपरेटेड बाय इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम और यू कैन से इंटर एट्रिक्युलर सेप्टम ओके तो जदि हम फोइटल हार्ट कथा कहबा गोटे छुआर हार्ट कथा जदि कहबा माने जो डेवलपिंग एम्ब्रियो तो कौन होची ना तार एट्रियल सेप्टम रे गोटे छोटो पोर थाए अ स्मॉल पोर इज प्रेजेंट इन द एट्रियल सेप्टम जाको हमें कहले फोरामेन ओवल ओके फोरामेन ओवल एट्रियल सेप्टम रे इन केस ऑफ द फिटस तो यूजुअली कौन हुए ना जिते बेले छुआटार बर्थ हुए सेतेले कौन हुए ना फोरामेन ओवलटा क्लोज हो जाए द फोरामेन ओवल क्लोजेस एट बर्थ कहीं ना से लंग्स गुड़ाक फुली फंक्शनल हो जाती तो मैंने से गोटे नेचुरल प्रोसेस कि आमर से फोरामेन ओवलटा क्लोज हो जाए किंतु किसी कंडीशन में कौन हुए छुआंकर से क्लोज हुए प्रॉपर्ली ताको हमें कौन कहबा ना पेटेंट फोरामेन ओवल ए कंडीशन को कहते हैं पेटेंट फोरामेन ओवल ए भलिया कंडीशन रे बेबी मानकर डिसऑर्डर थाए लाइक से मानकू विदाउट एनी रीजन तांकर हार्ट ब्लॉक्स आसी पारे कि हार्ट इंजरीज से मानकर देखा जाय पारे हार्ट अटैक्स आसी पारे ओके देन आम आसवा वेंट्रिकल्स को वेंट्रिकल्स आर थिक वर्ल्ड ऑरिकल्स रे कौन कहती थिन वर्ल्ड वेंट्रिकल्स होचंदी थिक वर्ल्ड आउ कौन वेंट्रिकल्स आर ब्लड पंपिंग चैम्बर्स देख एट्रिया रे कौन कहती दे आर रिसीविंग चैम्बर्स आ वेंट्रिकल्स होचंदी ब्लड पंपिंग चैम्बर्स आ सेपरेट होचंदी कहा थ्रू रे एक्जेक्टली इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जेने सेथरे हम कहथिले इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम सेने एथरे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम आ जदि हम इनर सरफेस कथा कहबा वेंट्रिकल्स रा सो द इनर सरफेस रे कौन अछि ना से जो मसल्स गुड़ाक अच्छा इनर सरफेस रे से माने गोटे रिज भाया होती और कलम भाया एमती देखा कलम भाया बनी मसल्स ताको हमें कौन कहले ना कॉल्यूमनी कार्नी और ट्राबेक्यूली कार्नी ओके कॉल्यूमनी कार्नी और ट्राबेक्यूली कार्नी कहा को कहूचे आमे ना वेंट्रिकल्स रा भितर जो मसल्स अच्छे से माने रिज भाया स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करछंदी और कलम्स भाया देखा तांको हमें कहले कॉलमनी कार्नी और ट्राबेक्यूली कार्नी तो ये जो रिज गुड़ाक बनिले किछि सेथरु कोनिकल रिज थांती है ये कोनिकल रिज था से कोनिकल रिज गुड़ाकर सॉरी कोनिकल रिज को हमें कहले पैपिलरी मसल्स कन्फ्यूज हेनी फर्स्ट हूँ कॉल्यूमनी कार्नी से कॉल्यूमनी कार्नी जो रिज गुड़ाक किछिटा कोनिकल था से कोनिकल को हमें कहूचे सॉरी कोनिकल रिज को हमें कहले पैपिलरी मसल्स और सेमानकर एपेक्स ये जो एपेक्स रीजन गुड़ाक
एपेक्स रो प्लूरल होची एपिसेस ओके तो से माने जोठी कनेक्ट होइचंदी फर्दर से माने बन जाय कि कनेक्ट होइचंदी एंदी बहुत सारा एपेक्स थिबो तो जोठी कनेक्ट होइचन ताको हमें कहले कॉडी टेंडिनी और ताको हमें हार्ट रो स्ट्रिंग्स बोली भी कहूचे ता ना होची कॉडी टेंडिनी और स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट सॉरी देखो यही जगह रे अछंदी स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट कॉडी टेंडिनी आ एठी अछंदी हमर पैपिलरी मसल्स एंड कॉलुमनी कार्नी ओके तो वेंट्रिकल्स भी डन देन आउ गोटे अच्छे हमर बिगेस्ट आर्टरी प्रीवियस क्लास रे कहतली आर्टरी रो फंक्शन कोन ना दे कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड सो बेसिकली हमर आउटाटा कोठु अराइज हेची ना लेफ्ट वेंट्रिकल रु हला लेफ्ट वेंट्रिकल रु आउटा स्टार्ट हेची देखो एठू लेफ्ट वेंट्रिकल रु आउटा स्टार्ट हैला ना ए जो कलर चेंज करची गोटे मिनिट देखो एटा होची लेफ्ट वेंट्रिकल आउटा स्टार्ट हेची एठू लेफ्ट वेंट्रिकल रु तो आउटा को जदि हम डिविजिबल करबा इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फर्स्ट होची असेंडिंग आउटा देन होची आर्च ऑफ द आउटा देन डिसेंडिंग आउटा जोड़ा हमको देखा जाउनी एटी डिसेंड हेची देखो एटी बाहरची डिसेंडिंग आउटा आउटार काम कोन ना इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आ जदि वेन्स कथा कहबा हम पाखरे कोन कोन वेन्स अछंदी वेन्स रो फंक्शन कोन ना दे कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट से माने हार्ट को विभिन्न ऑर्गन्स रो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके आनंती तो फर्स्ट होची सुपीरियर वेना कावा देन इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस सुपीरियर वेना कावा रो काम कोन ना दे कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर रीजन ऑफ द बॉडी कौन कौन ना हेड नेक थॉरैक्स फोरलिम्स एगुड़ा सब अपर रीजन ऑफ द बॉडी एठो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमर किए कैरी करके आने ना सुपीरियर वेना कावा सेंदी इंफीरियर कौन करथबो ता नारो ही जणा पड़ची लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रो से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके आनथबो आ कोरोनरी साइनस कौन करे ना इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट इटसेल्फ माने हार्ट भीतर रे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ताको कैरी करके निए ताको हमें कहले कोन ना हार्ट ऑफ द हार्ट कोरोनरी साइनस को हार्ट ऑफ द हार्ट भी कहंती सॉरी माय मिस्टेक हार्ट ऑफ द हार्ट को कहंती कोरोनरी साइनस कौन करे ना हार्ट भीतर ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके निए दैट इज व्हाई हमको स्ट्रक्चर कोरोनरी साइनस एते क्लियरली देखा जाएनी ओके एगुड़ा सब हला तार बाहरी स्ट्रक्चर देन कोन अछि ना हार्ट रे किछि वाल्व्स प्रेजेंट अछंदी वाल्व्स गुडा कोन ना दे आर मेड आउट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू आउ तांको काम कोन ना से माने प्रिवेंट करंदी बैक फ्लो ऑफ द ब्लड माने ब्लड ता जो डायरेक्शन रे फ्लो कला सेही डायरेक्शन रे फ्लो करबा आउ से बैक फ्लो करि परिबनी हला ताको प्रिवेंट करिया पे अछन हमर वाल्व्स आउ कौन करनी ना दे ऑल्सो प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ आर्टेरियल एंड वेनस ब्लड माने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को से मिसिया को दियंतिनी तो जदि हमें वाल्व्स कथा कहबा कौन कौन अच्छे हम पाखरे ना हमर जो एट्रियम और वेंट्रिकल अच्छे ता भितर किछि किछि वाल्व्स प्रेजेंट अछंदी तो फर्स्ट होची ट्राइकस्पिड वाल्व कोठी अछि ना प्रेजेंट इन बिटवीन द राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल राइट साइड रे अछि ट्राइकस्पिड वाल्व और लेफ्ट साइड रे एट्रियम और वेंट्रिकल मझे अछि बाइकस्पिड वाल्व जाको में मिट्रल वाल्व भी कहूचे तो द मिट्रल वाल्व इज प्रेजेंट इन बिटवीन राइट लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल आउ कौन अछि हमर जो आओटा अछि आओटार एंट्रेंस रे आओटिक वाल्व अछि और पल्मोनरी आर्टेरिया और वेन्स रे अछंदी पल्मोनरी वाल्व ओके सेमिति सुपीरियर वेना कावा कहली तो वेन्स गुडा को जो सुपीरियर वेना कावा रे अछि सेमिलुनर और हैवर्शियन वाल्व कोरोनरी साइनस रे अछि थिवेशियन वाल्व इंफीरियर वेना कावा रे अछि यूस्टाचियन वाल्व एगुडा सब मन रखिथिबो म आज क्लास रे पचरबी कोठी को वाल्व प्रेजेंट अछि ओके देखो एटा अछि बेसिक स्ट्रक्चर ट्राइकस्पिड वाल्व ट्राई काहेकि देखो तीनटा कस्प बनिछि 1 2 एंड 3 कस्प आर देयर बाइकस्पिड रे दीटा कस्प बनिछि एगुडा कहउछन एटा आउटर रे प्रेजेंट रे आउटिक वाल्व एठी पल्मोनरी वाल्व अछि ओके सो वाल्व रो काम कोन ना से माने ओपन और क्लोज होंती तो जदि वाल्व टा कंप्लीटली क्लोज न हो पारुछि सेही इनडेफिशिएंसी को हमें कहबा कि इनसफिशिएंसी और इनकम्पिटेंस इफ द वाल्व्स आर फेल टू क्लोज कंप्लीटली देन हमें ताको कौन कहबा ना इनसफिशिएंसी और इनकम्पिटेंस आउ जदि कंप्लीटली ओपन होबा पई ताको देरे प्रॉब्लम अछि फेलियर ऑफ वाल्व टू ओपन कंप्लीटली देन हमें से प्रॉब्लम को कहबा स्टेनोसिस ओके सो थैंक यू दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास होप समस्त बुझी जाइथिबो जहा डाउट्स अछि क्लास रे क्लियर करबा ओके थैंक यू